इमेजिन एक छोटा सा पिंक डॉग मिडल ऑफ नोवेयर रहता है, हर रात मॉन्स्टर्स आते हैं और हर बार सिर्फ वही उनको रोकता है। बट हियर्स द स्ट्रेंज पार्ट, शो का नाम था करेज द कवर्डली डॉग, पर असली स्टोरी फियर की नहीं ट्रॉमा की थी। और जो बचपन में फनी लगता था वही आज एडल्ट एज में डिस्टर्ब करता है। अगर तुमने ये शो बचपन में देखा है, यू आर नॉट वॉचिंग अ कार्टून, यू आर वॉचिंग अ साइकोलॉजिकल हॉरर डिस्गाइज्ड एज किड्स एंटरटेनमेंट। एंड आफ्टर टुडे तुम कभी भी नोवेयर सेम नजर से नहीं देखोगे। द डार्क ट्रूथ बिहाइंड द करेज द कवर्डली डॉग। Why this cartoon felt different? 90s और अर्ली 2000s के कार्टून्स दो टाइप्स के होते थे, फनी केओस या एक्शन एडवेंचर। टॉम एंड जेरी स्लैपस्टिक थी, डेक्स्टर साइंस कॉमेडी थी, पावरपफ गर्ल्स सुपर हीरो फन था। बट करेज वाज अनकंफर्टेबल, साइलेंस ज्यादा था, डायलॉग्स कम थे, बैकग्राउंड एम्प्टी था, और सबसे इम्पोर्टेंट विलन्स फनी नहीं थे, दे वर डिस्टर्बिंग। रिटर्न द स्लैप गाय, फ्रेकी फ्रेड, किंग रामसेस, द मास्क, द स्पिरिट ऑफ द हार्वेस्ट मून, ये सब विलन्स एक कॉमन चीज शेयर करते थे, दे डिडंट बिहेव लाइक कार्टून कैरेक्टर्स, they behaved like nightmares। और इसीलिए यूएस ऑडियंस के लिए भी ये शो किड्स हॉरर कल्ट क्लासिक बन गया, बिकॉज किड्स didn't understand it but they felt it। द क्रिएटर्स चाइल्डहुड ट्रॉमा। शो के क्रिएटर जॉन आर डिलवर्थ इस शो को लिखते वक्त मॉन्स्टर्स इमेजिन नहीं कर रहे थे, वो अपना चाइल्डहुड इमेजिन कर रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में इनडायरेक्टली रिवील किया, करेज की स्टोरी बेसिकली अ चाइल्ड ट्राइंग टू प्रोटेक्ट फैमिली इन एन अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड। मतलब मॉन्स्टर्स रियल नहीं, फियर रियल है। करेज का कॉन्स्टेंट स्क्रीमिंग एंग्जाइटी अटैक रिप्रेजेंट करता है। और सबसे बड़ा क्लू, करेज कभी भी घर छोड़कर नहीं जाता, बिकॉज ट्रॉमेटाइज्ड किड्स डोंट रन अवे, दे एंड्योर। द ट्रू मीनिंग ऑफ नोवेयर, नोवेयर कांसास ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, इट्स अ साइकोलॉजिकल स्टेट। अमेरिका में रूरल आइसोलेशन एक रियल फेनोमेनन है, जहां माइल्स तक कोई नेबर नहीं होता। अब सोचो, एक चाइल्ड, दो स्ट्रेंज एडल्ट्स और कोई हेल्प नहीं। दिस इज नॉट अ सेटिंग, दिस इज वल्नरेबिलिटी। नोवेयर एक्चुअली सिंबलाइज करता है आइसोलेशन, नेग्लेक्ट, इमोशनल अबंडमेंट। म्यूरल जो कि कंफर्ट पेरेंट, यूस्टस जो कि अब्यूजिव ऑथोरिटी फिगर, और करेज द चाइल्ड स्टक बिटवीन देम। यूस्टस इज द रियल मॉन्स्टर। हर एपिसोड में मॉन्स्टर आता है, बट यूस्टस ऑलवेज वर्स होता है। ही येल्स, ही इंसल्ट्स, ही स्केयर्स करेज इंटेंशनली। स्टूपिड डॉग, ये लाइन फनी नहीं थी, इट वाज वर्बल अब्यूज। और एक हिडन डिटेल, मोस्ट मॉन्स्टर्स म्यूरल को हर्ट करते हैं, बट यूस्टस ऑलवेज हर्ट्स करेज, बिकॉज शो का कोर मैसेज ये है, रियल मॉन्स्टर्स घर के अंदर होते हैं, बाकी सब फियर्स अस ट्रॉमा के मैनिफेस्टेशंस होते हैं। द डिस्टर्बिंग एपिसोड एक्सप्लेन्ड, रिटर्न द स्लैप, किंग रामसेस रिपीट करता रहता है सेम लाइन, Return the slab. What? Return the slab, or suffer my curse. बिकॉज ट्रॉमा रिपीट्स, पीटीएसडी मेमोरीज भी लूप में चलती है। करेज रिप्रेजेंट्स सर्वाइवर रिस्पॉन्स, यूस्टस रिप्रेजेंट्स डिनाइल। देन फ्रेकी फ्रेड, फ्रेड के वर्ड्स पोएट और रिदमिक है, ही डजंट एक्ट वायलेंट, ही एक्ट्स कंट्रोल्ड। Holiday. Courage! Come and meet Fred! That's when my tired eyes beheld a doggy dog. Like dog he spelled. D-O-G is what he spelled, and that's how I spell naughty. ये रिप्रेजेंट करता है फियर ऑफ पीपल हु अपीयर नॉर्मल बट आर डेंजरस। एडल्ट व्यूअर्स नोटिस, दिस एपिसोड इज अबाउट बाउंड्रीज वायोलेशन। द मास्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड। ये एपिसोड कार्टून नेटवर्क की हिस्ट्री में एक बोल्डेस्ट टॉपिक टच करता है। बनी और किटी की स्टोरी डोमेस्टिक अब्यूज रिप्रेजेंट करती है। डायलॉग डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, बट विजुअल स्टोरी टेलिंग सब बोल देता है। यूएस की ऑडियंस ने इस एपिसोड को लेटर रिकॉग्नाइज किया एज वन ऑफ द फर्स्ट चिल्ड्रंस शोज एड्रेसिंग अब्यूजिव रिलेशनशिप्स। व्हाई करेज स्क्रीम्स सो मच? पीपल थिंक ही स्क्रीम्स बिकॉज ही इज कावर्डली। रॉन्ग, ही स्क्रीम्स बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स डेंजर बिफोर एडल्ट्स डू। चिल्ड्रन नोटिस थ्रेट्स फर्स्ट, एडल्ट्स इग्नोर देम। और हर एपिसोड में एक सेम पैटर्न होता था, करेज वॉर्न्स, देन इग्नोर्ड, देन डिजास्टर, एंड देन करेज सेव्स। दैट्स लिटरली हाउ चिल्ड्रन इन अनस्टेबल होम्स फील। द सैडेस्ट थियरी, डार्केस्ट इंटरप्रिटेशन, व्हाट इफ मॉन्स्टर्स रियल ही नहीं है? व्हाट इफ वी आर सीइंग द वर्ल्ड थ्रू द करेजेस माइंड, और हर डिस्टॉर्टेड क्रिएचर एक्चुअली नॉर्मल ह्यूमन है, बट चाइल्ड्स ब्रेन उन्हें मॉन्स्टर बना देता है। यूस्टस का शैडो ह्यूज दिखता है, रूम्स जायंट लगते हैं, साइलेंस लाउड लगता है, बिकॉज फियर एग्जेजरेट्स
reality. So Courage is not fighting with ghosts, he is coping. Why the show ended? Cartoon Network gradually shift हुआ कॉमेडी और एक्शन की साइड पे. करेज का टोन उनके ब्रांड से मैच नहीं कर रहा था, बट एक्चुअली रीजंस डीपर था. शो वाज इमोशनली हेवी. किड्स लव इट, एडल्ट्स एनालाइज्ड इट, बट नेटवर्क्स डिडंट नो हाउ टू कैटेगराइज इट. Too scary for kids and too cartoon for adults. So instead of cancelling a failure, they quietly ended a masterpiece. Final message: Courage एक horror show नहीं था. It was a story about living with fear, protecting loved ones, and surviving childhood. He was scared, yet he always chose bravery. और शायद इसीलिए इसका नाम Brave Dog नहीं रखा गया. Because real bravery fear के बिना नहीं होती. Real bravery is acting despite fear, and that's why Courage was never cowardly. He was the bravest character in cartoon history. If this cartoon disturbed you as a kid, congratulations, you understood it before you're supposed to. If you like the video, तो जरूर like, share और subscribe कर देना, because some childhood shows were never meant for children. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye.